Mic check, mic check, mic check, mic check, mic check, mic check. जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। टेक विश्व के एक फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ आपका होस्ट विश्वजीत और आप देख रहे हैं मेरा टेक विश्व यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा आप सभी का, जहाँ पे एक नया प्रोडक्ट आज लॉन्च होने जा रहा है। उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे और देखेंगे क्या नई चीज़ें रियलमी की तरफ से यहाँ पे ऑफर की जाने वाली है। तो बहुत कुछ यहाँ पे लॉन्च हो रहा है, बहुत सारे लाइव इवेंट हो रहे हैं। एंड जो लोग कल भी मेरे लाइव स्ट्रीम के साथ में जुड़े थे उन लोगों के लिए सबसे पहले तो बताना चाहूँगा कि ड्यू टू सम अनअवॉइडेबल रीजंस कल का लाइव स्ट्रीम प्रॉपरली फ्लो आउट नहीं कर पाया मैं। लेकिन आई एम मेकिंग श्योर कि उसके उसके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें लगेगी या जो भी इम्पोर्टेंट बैकअप्स लगेगा उसके बारे में मैं कुछ ना कुछ रेडी करने का यहाँ पे कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो पहली बार अगर आप मेरे चैनल पे जुड़े हैं तो मैं आप सभी से बात करना चाहूँगा ये सब छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर, जहाँ पे आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जो भी नए यूट्यूबर्स लाइन में आना चाहते हैं ये नए यूट्यूब के लाइफ में, वहाँ पे तो उन लोगों के लिए क्या क्या दिक्कत है उसके बारे में भी मैंने कल बात किया। लेकिन आप जैसे लोगों का ही सपोर्ट है, जहाँ पे अगर कभी कुछ गलत हो जाता है तो हम लोग फिर भी ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ नया लाने के लिए। तो आज उसी के फ्रंट के ऊपर हम बात करते हैं। 12:30 पे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम चालू होने जा रहा है। तो 12:25 हुए तो क्विकली देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे नई चीज़ें यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये लाइव पसंद आएगा तो ठीक है। और इस ये लाइव जो है बेसिकली दिस विल बी इन 3 डिफरेंट सेशंस। आई एम बैक गेमिंग करके बोला है, फर्स्ट लाइक फर्स्ट व्यू। थैंक यू। आई एम बैक गेमिंग, जी हाँ। थैंक यू फॉर योर लाइक एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। डेफिनेटली वी आर गोइंग टू हैव अ ग्रेट फन टुडे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे आज ये 3 सेशंस में ये सेशन होने वाला है। 12:30 से इनका लाइव स्ट्रीम चालू हो जाएगा, वो आप एंजॉय कीजिए। उसके बाद एंड में मैं एक Q&A सेशन रखूंगा आप लोगों के लिए। अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो उसके बारे में बात करते हैं। और अभी जो फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन है दैट विल बी फिनिश्ड विद इन 5 मिनट्स, जहां पे हम लोग बात करेंगे कि अभी तक क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे निकल के आई है। ठीक है, तो ऐसे 3 सेशन में ये पूरा सेशन होने वाला है। एंजॉय कीजिए ये पूरा सेशन। लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। फिर मेरे पूरे सेशन में कोई चीज़ अगर आपको पसंद नहीं आती है तो मैं तहे दिल से बताना चाहूँगा कि प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट कीजिए। आई विल बी डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव इट फर्दर। और बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर हियर टू लिव एंड वी आर हियर टू इम्प्रोवाइज अवर सेल्फ, राइट। कोई भी बंदा अपने एंड से परफेक्ट नहीं रहता, तो वहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए और लाइव सेशंस आपका बेहतरीन बनाने के लिए। ठीक है, तो चलिए क्विकली जंप करते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल है अपने पास। क्या क्या
क्या क्या यहाँ पे ऑलरेडी निकल के आया है उसके बारे में आज पहले बात करते हैं। लेट मी मेक माई ग्रिड अ लिटिल बिट स्मॉल, और यहाँ पे हम लोग बात करते हैं रियलमी की तरफ से जो जो चीज़ें नई लॉन्च होने जा रही है आज उसके बारे में। सबसे पहले तो बात करते हैं रियलमी GT का। तो आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा रियलमी GT जो है ये एक ऐसा फ़ोन है जिसने चाइना और बाकी दो तीन और कंट्रीज़ में बहुत बड़ा तहलका कर दिया है। रियलमी GT ऑलरेडी कुछ कंट्रीज़ में ऑलरेडी मार्केट में आ चुका है, और जहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट उनको रियलमी को देखने को मिल रहा है, और ये फोन सबसे लास्ट फेज में इंडिया के अंदर लॉन्च होने जा रहा है। तो बात करते हैं रियलमी के GT सीरीज का। व्हाई GT सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर रियलमी, और व्हाई दिस विल बी अ ग्रेट सीरीज फॉर इंडियन पब्लिक एज वेल, बिकॉज रियलमी GT में आपको फ्लैगशिप रियलमी का ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी भी आज भी कुछ डिस्कनेक्शंस मुझे दिखाई दे रहे हैं इंटरनेट के लिए, लेकिन प्लीज बेयर विथ मी। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो रियलमी GT में आपको सबसे प्यारी बात तो देखने को मिल रही है, स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है, और स्नैपड्रैगन का 778G प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। ये दोनों प्रोसेसर जो है वो अपने सीरीज का फ्लैगशिप लेवल का प्रोसेसर है, 800 का एंड 700 का। तो ये दोनों प्रोसेसर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। 65 वॉट का सुपर डार्ट चार्ज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो मुझे लगता है बहुत ही फास्ट रहेगा। और यहाँ पे GT मोड करके एक रियलमी ने खास मोड दिया है। ये लॉन्च हम अभी ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे निकल के आई है। तो जिस तरीके से बात करते हैं स्नैपड्रैगन का 888 5G प्रोसेसर, इसके बारे में आज हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 25% तक CPU इंक्रीज देखने को मिल रहा है, 35% तक आपको GPU परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, और 70% तक का आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो AI परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो AI परफॉर्मेंस क्यों बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उसके बारे में आज हम यहाँ पे बात करेंगे। तो उसके लिए मैं बताना चाहूंगा AI परफॉर्मेंस जो है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज आप डे टू डे जितना फोन इस्तेमाल करते हो, तो आपका फोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूटिलाइज करके आपके डेली के यूसेज के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए आपका फोन आपके लिए ट्वीक करता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो प्रोसेसर है दिस इज अ 5 नैनोमीटर प्रोसेसर, तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है। Antutu स्कोर आप देख पा रहे हो 7,35,000 के आसपास देखने को मिल रहा है आपको। और रियलमी GT का जो मास्टर एडिशन है उसमें भी आपको स्नैपड्रैगन 778G देखने को मिल रहा है। ये भी प्रोसेसर 6 नैनोमीटर के प्रोसेस के ऊपर आता है, और इसका Antutu स्कोर आप देख पा रहे हो 5,41,000 के आसपास आने वाला है। सो दीज फोन्स डेफिनेटली प्रोवाइडिंग फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस फॉर श्योर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो आपको स्टेनलेस स्टील वेपर कूलिंग भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप फोन इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप गेमिंग में ज्यादा बिलीव करते हो तो गेमर्स के लिए दिस विल बी अ ग्रेट फोन, बिकॉज आपको तगड़ा प्रोसेसर मिल रहा है और आपको यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का वेपर कूलिंग भी देखने को मिल रहा है, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड का रिडक्शन देखने को मिल रहा है ऑन पीक्स। डायनेमिक रैम एक्सपेंशन भी देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 7 GB तक का रोम जो है वो आपका यूज होगा रैम के लिए फॉर फास्टर मल्टीटास्किंग। ये चीज मैंने कभी रियल टाइम में देखी नहीं है, लेकिन जरूर मैं इसको चेकआउट करना चाहूंगा। आप में से किसी ने रियलमी का ये ऐसा फोन बाय किया है जिसने डायनेमिक रैम एक्सपेंशन का फीचर ऑन किया है और आपको परफॉर्मेंस में डिफरेंस नोटिस आ रहा है, तो प्लीज मुझे पोस्ट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आपके साथ में एक सेशन जरूर लेना चाहूंगा इसके लिए, ठीक है। उसी के साथ में स्मार्ट 5G के साथ में आ रहा है, जहाँ पे 4G और 5G के बीच में ये इंटेलिजेंटली स्विच होंगे, और उसकी वजह से आपका बैटरी सेव होगा, ठीक है। मैं कॉन्स्टेंटली टाइम देख रहा हूँ 12:30 होने को आए हैं, तो लेट्स क्विकली जंप टू द सेशन इटसेल्फ फर्स्ट, और बाकी की चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक गाइज प्लीज लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में डालिए आपके जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो, ठीक है। उसके बारे में हम एंड में जरूर बात करेंगे। तो लेट्स क्विकली जंप टू द लाइव सेशन। Hello everyone. Hope you have been staying safe and keeping well. This is your friend Madhav. Start ही होने जा रहा है. Nothing makes We me are on more time. thrilled Yes. than standing here and bringing the curtains down on our exciting new launches. And today is a truly special launch for the Realme in its 3 years of a journey. I would like to share some great news, and first of all to all the Realme fans who have supported and were part of our journey in these 3 years. Firstly, 100 million. Yes, that's the number of Realme fans across the world now, and I'm extremely proud to let you know that Realme is the fastest smartphone brand to reach this number. Disruption runs in our veins. Dare to leap is sculpted in our genes. It gives me even more pride and joy to say that here in India, where Realme's fantasy started, we are at a 50 million strong family today, and again the fastest brand to reach this number.
As a cherry on the cake, REALME India also grew to become India's real 5G leader in the recent Q2 with the most sales of 5G smartphones. You know how dedicated and aggressive REALME is to democratize 5G in India despite all the challenges. But we believe in the trend, the future and your desire. 5G is a faith that's close to our hearts. All of this together has composed the chorus of REALME, Dare to Leap. We welcome all the challenges with a smile to those who laugh at us. We enjoy all the uncertainties and say hello to the very unique day and challenges. We dare to leap and we dare to believe. However, we know deeply from our heart that all of this wouldn't have been made possible without a word, that's you. Without all the love and unwavering faith from our eager fans, media friends, partners and REALMEers. You made us, and thank you for being there with us and resonating with us. Please always dare to be what you are and always you will be. Forever young, forever believing in yourself. And here is a tribute for all those daring you, with the inspiration of your stories. How dare you, they say. How dare you be disruptive? How dare you raise your voice at me? How dare you talk like that, like you actually know what you're talking about? Stop talking. Can you do that? Now look at you. How dare you wear pink, wear blue, dress like a girl, dress like a boy, dress like... What is that? How dare you be like everyone else? How dare you be different? How dare you be the difference? How dare you be defiant? How dare she? How dare he? How dare they? How dare you? How dare you be quiet, be loud, be crazy, be hated, be loved, be the voice, be the change? How dare you be you? Please applaud for every daring you. And this August, REALME has a gift for you, all of you, and your love and support which you have bestowed upon us. We are throwing the REALME Fan Festival with a bold call out. How dare you be you from today onwards with amazing offers and interesting events. Again, a big thank you to everyone who had faith in us and made us who we are today. However, is this enough? No ways. Leaps never end for a real leaper. As the saying goes, nothing quite succeeds like success. Our success only pushes us to work harder and deliver better. Now is time for the REALME to set off for a new expedition to achieve something bigger. First among all is to continue to democratize the latest 5G technology to more Indian fans. Millions of Indians trust REALME to be their preferred life-mate and want to get connected to the beautiful world with their REALME smartphones or other REALME devices. The 5G network ecosystem plays an important role to uplift the connection to the new level. And REALME, as India's real 5G leader, will be committed to this role and to enable more and more users to get access to 5G devices. You know that the 5G processors play an important role in making the 5G experience more affordable and accessible. However, as many of you know, there is a serious shortage of processors worldwide, not just for smartphones, but also for other industries such as automobiles, consumer electronics and many more, which I would like to talk a little more about this. There are few reasons for the shortage of processors, and it is very important for us to make you aware of this situation. The sudden pent-up demand post the pandemic has skyrocketed the need of the smartphones and the other electronic devices among the users. Actually, a chipset doesn't just mean processors. There are other chipsets in the smartphone like power IC, PA and multiple other ways. Also, the prospecting EV industry is also creating a huge demand for all these kinds of chipsets. From a supply chain perspective, inaccurate forecast of the pandemic situations last year and the black swan events like Texas snowstorm and many more, there has been a considerable gap in the supply chain that failed to meet such huge requests from the demand end. The whole industry has been taking actions to relieve the situation, but this chipset shortage may last little longer than expected. But the real success lies in how you face adversities. As a dynamic and a daring brand, we are always ready to face difficulties with optimism. So I want you to take this opportunity to assure everyone that REALME will be putting in more than 100% of its efforts to assure enough supplies, especially during these upcoming festive seasons. We are highly driven
and focused to bring fantastic products with the cutting edge processors. And today, to light up this Diwali and set a milestone to start Realme's new expedition, we are thrilled to bring many more things to the Indian market and the much most anticipated new flagship series of Realme GT 5G series as a part of our commitment to our fans. What does GT mean? Sheer speed, master design, cutting edge technology will always be sported by the Realme GT products. It is a racer, a warrior, a terminator, a powerful being to disrupt the old power world. His vision is to explore the aesthetics of technology. It means to become a real flagship killer. As you may know, Realme GT 5G series has been launched in some various other markets. It has disrupted those markets and has received overwhelming appreciation from the media fans and has nailed its success. We have been number 1 in Spain, France, Germany, Italy, Portugal, reflecting its nature of Realme GT being a flagship killer. With the Realme GT 5G series, we will always bring the latest technology, innovations and the most powerful 5G processors to the Indian market at the most democratized prices. Today, we are launching 2 GT products, Realme GT with the most premium 5G processor, Qualcomm Snapdragon 888 at a killer price, and Realme GT Master Edition with Qualcomm Snapdragon 778G 5G processor. To make these devices more accessible, Realme will keep on launching the Real Upgrade program on all the GT models in partnership with Flipkart Smart Upgrade program. Nearly 25% of its users have availed these benefits of this program and were able to purchase their most desired Realme flagship smartphones at only 70% of the cost. We have been continuously receiving requests from eager users to launch a trend-setting Realme laptop. Your wish is our command. For laptops, we understand how important it is in your life. We don't want to just launch it just to expand into a new category and bring compromised products. We want to bring you the best-in-class product. We want to launch it as a significant being in our tech ecosystem to bring you the most wonderful experience of being smart and connected. The Realme Book Slim will be one of the slimmest and the lightest laptops available in this segment, making it extremely easy to carry. It also comes equipped with a 2K display for a great viewing experience at a full screen and a larger image resolution, which was ported by the flagship laptops only before. Alicio will let you know the details later. The pandemic further showcased the power and charm of technology. This further strengthens our vision to act as a tech trendsetter in our new expedition. Realme will keep on launching more fantastic products to enhance the cause, to make our contributions and to bring the pleasures and the convenience of tech to more users. Realme has always dedicated to democratize the cutting-edge technologies in these categories, like ANC for smart hearables, 2K display for smart TVs and many more, and now 2K 3:2 display in the laptop segment. These stories will go on. Realme has entered the ART 2.0 era with an advanced 1 plus 5 plus T strategy. 1 plus 5 plus T is defined as 1 which is smartphones, 5 key categories for Realme's ART products, including the TWS, wearables, TVs, laptops and tablets. T stands for the Tech Life, Realme's open partner platform. Okay. Realme's Tech Life platform has 3 portions, Realme own product lines, collaboration with other brands and licensing other products. This May, the first brand in Realme Tech Life ecosystem, DIZO, was debuted. Realme Tech Life will be committed to bring more amazing brands and products to build a smart, connected life empowered by technology. You will see washing machines and other white goods under Realme Tech Life very soon before Diwali. Another new program in the new expedition is always about you. Realme fans. Realme wants to build a smartphone and ART products with Realme fans together. We believe in the creativity of our community, and that is why we are going to kick off our Realme Co-Creation program. You are officially invited to join the development of the various Realme products and make them come true for all the tech enthusiasts like you. Last but not the least, Realme is always committed to making our contributions to Make in India. Apart from 100% smartphone manufacturing in India, 100% smart TVs local manufacturing, we also initiated smartwatch local manufacturing to provide more opportunities to the community. We will start exporting to the neighboring countries as well. Besides, now we are also initiating our Realme Entrepreneurship program with a close to 50 crore rupees subsidy to support people
who would like to build their own entrepreneurship starting with Realme Store and create changes in their life. If you want to democratize amazing products to bring to the benefits of the technology to the masses like Realme, let's do it together. For more details, please check on realme.com. Before we move to the next part, again a big thank you to all of you. And are you ready? All packed? Let's set off together into the new expedition and start our journey together. Over to your favorite fellow traveler, Shri. Hello everyone, I'm Sri Hari, Product Manager Realme Global. But today, guys, I'm please your fellow traveler and it feels great to be back again with an exciting range of products. To begin with, let's start by talking about the design language of today's smartphones. What we see around us is pretty basic and honestly sometimes it gets really boring. This surprisingly happens a lot amongst flagships too. Everyone is offering similar designs that are dull, derivative or sometimes both. Makes one wonder, when did the industry give up trying to design smartphones? Well, that is because a true design breakthrough doesn't come easy. Sometimes you need to challenge an accepted way of thinking to establish a new standard. One would need to have the audacity to break the rules rather than accept it, to take the risk of failing rather than not trying. We've made quite a few attempts so far, including the introduction of the glow-in-the-dark finish in the Realme 8 Pro. Today, we at Realme plan to push the boundaries of design and innovation once again. The Realme GT Master Edition series. The edition of Realme GT was also made in celebration of our 100 million Realme fans milestone. It is a way for us to show our gratitude to Realme fans from all over the world. Master Edition. We at Realme are very careful when it comes to using the term Master Edition. So what does Master Edition mean? In short, from quality of the product to the originality of the Realme product design, Realme Master Edition products will have designs that will stand the test of time. Speaking of iconic designs, the design of the Realme GT Master Edition series is incredibly unique and it will definitely catch your eye. This time around, to design the all-new Realme GT, we have worked closely with Mr. Naoto Fukasawa. He is one of the most influential industrial designers of the 21st century and he's created some of the most iconic products of our time. Some of you might be familiar with his iconic work with Muji. Like the CD player over here, it has been designed to be able to blend in with any type of home decor theme. This work has won several awards and praises around the world. Realme is one of the very fortunate brands in the world to work closely with Mr. Fukasawa to make some of the most inspiring smartphone designs of our time. And since the release of our first series, we've received tons of positive reviews, from the Onion and Garlic Edition Realme X to the Concrete and Red Brick Realme X2 Pro. Mr. Fukasawa took a surprisingly artistic approach towards the product, paying homage to most common construction materials. According to Mr. Naoto Fukasawa, a good design should be the one that improves a relationship between humans, objects, and the environment. This time with Realme GT Master Edition series, Mr. Fukasawa once again brought an all-new product design with the attempt to bridge that exact relationship, and I can't wait for you to see it. It's really amazing, isn't it? We have put in everything that we have learned over the past 3 years into designing the Realme GT Master Edition. We believe this is the most alluring product design we have done just yet. Now let me share with you the reason why we were inspired by the suitcase. We are living in a time where we've all lost so much physical freedom because of the pandemic, and we've almost forgotten what it feels like to travel. But we at Realme believe that exploration is not just about the distance we travel, it's also about the spirit of it. Through this design, Mr. Fukasawa wants to encourage the young and dynamic minds to keep exploring. So he chose to focus on the everyday object that most clearly stands for exploration, the suitcase. It's often neglected, but is always by our side on our trips and is loaded with our travel memories. Mr. Fukasawa selected the most classic feature of the suitcase, the horizontal grid. This was originally designed for structural strength, but has since become a classic visual element of the suitcase. And what color did he choose to symbolize exploration? Grey. It blends into our everyday environments to the point that we don't even notice it. But it's actually a color full of mystery and calm strength.
Grey. When the color grey meets suitcase design, you get a feeling of comfort as well as a peaceful sense of power. So here we have it, the Voyager grey suitcase design created by Naoto Fukasawa. Just a glance at it is enough to spark your travel memories and encourage you to keep exploring. Now let's take a look into how Mr. Fukasawa came up with the suitcase design. 旅とはどこかの土地へ行くという意味だけではありませ रियलमी ん。 की ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है। They 日々の don't 生活に探求心を持つことも they 旅だと always 思い give ま it a す。 try with designs。感染症の後、この考え方は大切になるでしょう。たとえどれだけ多くの場所を訪れたとしても、この場所に閉じ込められてしまったら好奇心を保てるでしょうか。今回REALMEと私はスマートフォンを作りました。このデザインを見ればすぐに旅行を思い浮かべるでしょう。3、2、1。リブのデザインはスーツケースの補強や滑り止めによく使われます。この機能が施されたスマートフォンを手にした瞬間、皆さんはスーツケースがまるで手の中にあるかのような錯覚に陥り、きっと探求心が生まれるでしょう。今、自由が身近に感じられないこの時期、私のデザインが皆さんの情熱を刺激できることを願っています。野心があれば目の前の世界は広がります。 REALME GT Master Edition。 दिख तो अच्छा रहा है फोन। Now let's dive into the बहुत अच्छा होगा ये making of फोन the का। suitcase design. There are three parts in this whole design process: the material, manufacturing process, and hand feel. वंश मल्होत्रा का कमेंट The REALME पढ़ते GT हैं, according Master to him, Edition REALME features 8 the Pro was world's designed better first than concave S21 leather and design, iPhone 12, making the according phone to feel customers. as Dare good to as leak. it looks. This should be there. Similar to a handcrafted leather suitcase, Thank the you, concave leather design is crafted with a high-quality polycarbonate panel as the starting base. Our design team then used a computer program machine to measure and stack prefabricated polycarbonate strips to a precise 0.3 mm thickness with 18.8 mm gap in between each stack, creating diagonal lines that are concave and convex for a comfortable hand feel. The final process involves Yeah, hot yeah, pressing a 100% piece of vegan vegan leather के leather साथ में over आ the रहा है। exterior, giving the मैंने बोला suitcase आपको कि design leather a finish sleek होगा look ये। that's soft to the touch. We are also pleased to share that the leather that we've used is 100% vegan leather that is ethically sourced and environmentally friendly. Like all REALME smartphones, we continue to keep the overall design insanely thin and lightweight at just 174 grams and just 8 mm thin. Right at the front, REALME GT Master Edition features a 120Hz Super AMOLED display with a 360Hz touch sampling rate, which makes gaming super responsive and extra smooth. 360 हर्ट्ज का टच Thanks to the 100% DCI-P3 color gamut coverage and 1000 nits of brightness, everything on the screen looks brighter and colors look lively. The REALME GT Master Edition series design drips with a premium look and feels great in the hand. Don't take our word for it. This design, in fact, won the IF Design Award 2021, making it a true work of art. We can't wait for you to get a hold of one. The all-new REALME Master Edition series also comes in two more colors, Luna White and Cosmos Black. Next up, let's talk about the performance. Let me invite Sachin Kalatri, Senior Director and Head of Product Marketing Qualcomm, to quickly introduce you to the very capable Snapdragon 778G 5G processor. Hello everyone. Many congratulations to the REALME team on the 100 million milestone and the launch of REALME GT Master Edition powered by Snapdragon 778G. Consumers today do much more with their smartphones. It has become their primary device for communication, productivity, entertainment, camera, music, and much more. And they continuously expect more and better features and experiences from their smartphones. At Qualcomm, we continue to innovate and deliver on those expectations. The Snapdragon 778G mobile platform is designed to deliver superior user experiences across all categories and make entertainment and multimedia more immersive and enjoyable.
than ever before. जी हाँ, ये दूसरा फोन है स्नैपड्रैगन 778G के साथ में। मोटोरोला कल जो लॉन्च हुआ वो फर्स्ट At फोन the है। heart of the Realme GT Master Edition comes the latest Qualcomm Snapdragon जी हाँ, ये बेस्ट 778G चिपसेट रहेगा 5G 11 processor. बैंड्स के साथ में The आ रही है। Snapdragon 778G 5G comes with a couple of new firsts within the 7 series family. It's the first to feature a 6 nanometer के process, ऊपर आ which रही means है। that you can expect better battery life without sacrificing performance. It also features the latest 6th generation Qualcomm AI engine for faster real-time computation. We also see an overall 40% faster processing performance and graphic performance, 123% faster AI performance per watt, along with 77% faster IPS computation performance. Coming up with an incredible Antutu score of 541,610. The score is about 40% higher than some of the 40% higher है। previous flagship processors from Qualcomm. In terms of connectivity, Snapdragon 778G provides faster network connectivity than ever before with the support of 5G, both millimeter wave and sub-6. And it also supports Wi-Fi 6 at up to 2.9 gigabyte download speed. So no matter where you are, you can expect the smoothest and fastest connectivity possible. The Realme GT Master Edition also comes with up to 8 gigs of RAM and 256 GB of ultra-fast storage. Needless to say, the Realme GT Master Edition also comes with one of our signature features, the 65-watt supercharged charging, letting you charge from 0 to 50% in approximately 11 minutes. 11 मिनट में 50% Now let's talk चार्ज हो about the गए ये फोन। experience. But experience doesn't come with specs alone. We have a dedicated team at Realme whose job is to make sure that the experience of the phone is speedy and fluid no matter what apps you throw at it. Our team has been working really hard to deliver that promise, and I would like to spend some time to showcase some of those innovations. Introducing the triple GT innovations. The following features are engineered specifically for the gamers and power-hungry users. Power users love doing intensive tasks, like for example playing BGMI while downloading something in the background, all the while listening to music. These activities can actually put a lot of stress on your processor, which generates heat and ultimately slows your phone down. To help with this, we've included a vapor chamber cooling system into the Realme GT Master Edition. Thanks to this, the temperature of the core heat area can be reduced by up to 15 degrees Celsius. Realme GT Master Edition also features dynamic RAM expansion by up to 5 gigabytes. And this can specifically help 5 GB reduce का dynamic loading RAM time expansion and देखने take को मिल app रहा है आपको। multitasking to a different level. Lastly, with GT mode in the Realme GT Master Edition, you can expect better gaming experience through full optimization of high frame rate games. Now let's talk about the software updates. The Realme GT Master Edition comes out of the box with Android 11. के साथ में Also, आ रहा है। not just that, our engineering teams at Realme 2 are साल का committed to Android 2 OS years update of सारी Android OS कंपनीज ने and क्लेम करना security चालू कर updates, दिया है अभी। which means your Realme GT Master Edition can get access to the latest innovations from Google and Realme. In fact, being a user-oriented brand, we invited our fans from all over the world to experience the new software updates in advance in order to improve the experience on the Realme GT Master Edition. Here are some of those fans who got the early experience. Thank you so much for participating, and this truly means a lot to us. Now let's move on to the camera. Realme के कैमरा के Smartphone बारे में cameras have बात करना become one of the पड़ेगा, because most कैमरा used इनका हमेशा features से on a वीक पॉइंट रहा smartphone, है। and it has always been an important focus area for us. This time around, the Realme GT Master Edition features some of the best camera specs in its class, with a 64 megapixel primary camera, a 119-degree super wide-angle camera, and a 4 centimeter macro camera. Over the past 3 years, we've been exploring many different genres with our Realme fans through many different photography contests. Our users inspire our camera teams day in, day out. And we've noticed that every great photo has a narrative. जी हाँ, कैमरा This में is ज़्यादा कुछ exactly नहीं the दिखाई दे aim रहा we है। have for our camera moving forward. We want to build the best possible camera that enables you to share your story in the best way possible. Street photography has been growing, and it caught our eye as something that can help more of our fans use it as a tool for visual storytelling. To do that, we must ask ourselves, what is street photography? One of the pioneers of street photography, Henry Cartier-Bresson, puts it the best. There is nothing in this world that does not have a decisive moment. Capturing the decisive moment pretty much sums up the essence of street photography.
This is exactly what we want to do, to build a camera system that can capture the decisive moments. Our camera team has been working on this system for quite a while now. So introducing the world's first street photography mode. The street photography mode is the first in its class that uses computational photography techniques to enable you to capture fleeting moments in an instant, even if you are an amateur like I am. Now I would like to spend the next few moments to showcase some highlights of Realme street photography mode. First is the DIS snapshot. At the press of the shutter button, the camera analyzes the image frames before and after the shutter press on the device in real time using computer vision. With DIS snapshot, you can capture precious moments precisely when you want. While modern autofocus is fast and accurate, it still takes quite a bit of time to snap the subject into focus. And often, we miss a shot because of that delay. We want to solve that too, with instant focus. You can now preset your focus at a distance of your choice, and all photos taken in that distance range will be sharp and in focus. Realme GT Master Edition also gives you quick access to the street photography modes by pressing the volume down button twice. This can help you capture the moment in front of you super quickly. Color and tonality can often reflect how a photographer feels when taking the pictures. Realme's simulated color filters have been designed to simulate negative film to bring moods and feelings into each of your photographs. Now let's go through some of these film simulation color filters quickly. First is a Kodak-inspired film. The color is designed to create depth and highlights into the photo, creating a warm, retro look for everyday urban shoot. Next is the black and white filter. Many might think that black and white photos are a thing of the past, but on the contrary, it's still as relevant today as the camera was first introduced 100 years ago. Black and white photography removes any distraction of color and helps the viewer focus on the subject. Last but not the least, we have dramatic films. We are inspired by the intense, high-contrast photographs that we commonly see in portraiture. Dramatic film increases hue and contrast of your picture to create a look that is vivid and natural. Alright then, this is the GT Master Edition. This is the best flagship design that we've ever made. Realme GT Master Edition features an award-winning suitcase design created by Naoto Fukasawa. On the inside, it is powered by latest Snapdragon 778G 5G processor coupled with a 120Hz Super AMOLED display along with 65-watt Super Dart charge and a 64-megapixel camera with the world's first street photography mode to help you capture better photos and tell better stories. To sum it up, let's watch a quick recap. बाकी सब कुछ ऑन द स्पॉट है फ़ोन का. स्नैपड्रैगन है, सुपर एमोलेड है 120 हर्ट्ज का, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो. सुपर डार्क चार्जर है 65 वॉट का. बहुत अच्छे निफ्टी फीचर्स यहाँ पे देखने को मिले हैं. आप देख पा रहे हो सुपर स्लिम है, लाइट वेट है, डिज़ाइन अच्छा दिया है. कैमरा 64 मेगापिक्सल का. Presenting REALME GT Master Edition with sheer speed and master design. ओवरऑल अच्छा है. Tick most of the boxes. Now let's begin with the flagship killer of 2021, the REALME GT 5G. The REALME GT 5G represents speed-inspired aesthetic, thunderous power, and sustained performance. Here comes These will be the three major features that the REALME GT 5G will bring to the GT users in terms of user experience. Since it's a flagship killer, we had to offer a killer design as well. In terms of design, since the product series is inspired by racing cars, it closely follows the core spirit of speed. Let's take a look at the two color options. We have dashing silver and dashing blue. In terms of craftsmanship, both the dashing silver and dashing blue uses 3D glass representing an accelerated track pattern design. Our industrial designers have used countless delicate optical grade textures to make the design symbolize speed. When you turn the phone, the light patterns will flow on the glass and gather together, and you'll feel that adrenaline rush. The racing yellow variant of the REALME GT 5G comes with dual-tone vegan leather, which is the result of months of R&D. It not only brings a unique look, but it's also quite practical. For example, it's fingerprint resistant and comes with anti-odor and crack treatment.
It uses an ultra fine grain 2.0 vegan leather material that has an extremely smooth feel. Now that we have spoken about the exterior speed inspired aesthetic, let's talk 888 about 5G देखने the को मिल रहा है performance. UFS As the 3.1 के flagship साथ में आ रहा killer है of LPDDR5 RAM 2021, देखने we को मिल believe रहा that है for Very the good. ultimate performance output, we couldn't compromise on the Realme GT's specs. Featuring the latest flagship processor, the Qualcomm Snapdragon 888, we've ensured that the Realme GT users have a no-compromise experience. The Qualcomm Snapdragon 888 chip is made using the most advanced 5nm process, thus enabling improvements in its performance and AI computing power while being highly power efficient. It has the stronger and larger Cortex X1 core that greatly improves its ability to respond to temporary high load demands. Upgraded together with the Cortex X1 core, there are also 3 new generation high-performance A78 cores. With this, CPU performance is increased by 20% and power consumption is reduced by 50% compared with previous generation. The high-performance Cortex X1 core and the cluster of Cortex A78 cores work together to generate the SoC's peak performance and sustain it. Given this sheer internal power, large apps not only boot faster, but they can also run for long periods of time without repeatedly crashing so that you can enjoy the sustained performance and uninterrupted entertainment. In terms of connectivity, the Realme GT 5G not only fully covers the major 5G bands, but also supports the industry's latest Wi-Fi and Bluetooth technology. The Realme GT 5G also features an LPDDR5 RAM, which not only brings the ultimate speed of 6400 Mbps, but also reduces the power consumption per bandwidth to about 60%. In addition to this, the Realme GT 5G is equipped with high-performance UFS 3.1 के साथ में आ रहा है तो रीड एंड राइट स्पीड बहुत अच्छा हो जाता है. Besides its storage performance, the Realme GT 5G also features a next-generation 3D stainless steel vapor cooling system to dissipate heat. To solve issues caused by a traditional pure copper cooling system, Realme has introduced a next-gen steel copper composite structure to the Realme GT 5G. The copper provides excellent thermal conductivity and is wrapped in stainless steel shell for enhanced strength. The design provides 42% higher strength than that of traditional copper VC cooling systems and solves the structural stability problems faced by other designs. With multi-layer 3D graphite thermal conduction and 100% coverage of core components, the Realme GT 5G supports a greatly improved cooling efficiency. The next-gen 3D stainless steel vapor cooling system showed 50% increased cooling power and was capable of reaching CPU core temperatures by up to 15 degrees Celsius. We've put great efforts into ensuring the cooling of our flagship devices, which matches their performance. The next key factor about sustained performance is battery life. Traditionally speaking, bringing large batteries and fast charging while maintaining a light and thin feel has always been a major challenge in the smartphone industry. I'm glad to announce that the Realme GT 5G has in fact achieved a breakthrough and has come up with a perfect solution. It features a massive 4500 mAh battery along with 65 watt super dart charging capabilities, which can charge the smartphone from 0 to 100% in approximately 35 minutes. By comparing the Realme GT 5G with charge speeds of other flagship smartphones with similar battery sizes, we can clearly see that it offers the fastest charging speed even in similar wattage scenarios. See, with the Realme GT 5G, we have tried our best to give the users an unmatched flagship experience, and we won't disappoint with the display as well. The Realme GT features a 6.43-inch 120Hz Samsung Super AMOLED display that is more than capable of providing the high responsiveness for hardcore gamers. With 4096 auto brightness levels, 120Hz refresh rate, 360Hz touch sampling rate, front and rear dual light sensors, the display will feel like an absolute luxury. Coming to the cameras, the Realme GT 5G boasts a 64-megapixel Sony triple camera setup with an 8-megapixel ultra-wide-angle lens and a capable macro lens. We have also added a number of functional improvements to photos, portraits, videos, and other commonly used features. Realme GT 5G also has smart night modes that allow you to take even better nighttime photos and videos. The addition of a new generation of pure raw night mode algorithm with noise cancellation brings sharper and clearer images in super nightscape.
Thanks to a significant improvement in chip's AI algorithm, we were actually able to bring super nightscape mode features to video as well. Ultra Nightscape Video 2.0 along with UIS Max Video Stabilization. Summing it up, let's take a look at the key features of the flagship killer of 2021, REALME GT 5G. The REALME GT features Snapdragon's latest flagship processor, Qualcomm Snapdragon 888, with the most advanced 5nm process. A trend-setting design with jaw-dropping innovations in both looks and ergonomics. Powerful charge and capacity delivered by 65-watt super dart charge on a 4500 mAh large battery. And lastly, a Sony 64-megapixel triple camera setup for breathtaking night shots. Oh hey, did I tell you? We didn't miss the 3.5mm headphone jack either. Alright then, that was all from the GT series. Now moving on to the most exciting part of today's launch, the REALME book. So without any further ado, let's call Alessio to learn more. Hello everyone, I'm Alessio, the Product Marketing Manager at REALME. Today we will introduce one of the most important parts of our 1+5+T strategy for you, REALME's first laptop, the REALME Book. This is REALME's first high-performance slim notebook, a perfect blend of hardware and software that's made to create. The laptop is always the best companion for our work and creativity. And the screen is the most important part of a laptop, since we face it for about 8 hours on a regular workday. For creators, a high-quality, especially high-resolution screen is essential. In the current market, though, for less than $1,000 USD, you often end up with laptops with a 1080p or even 768p resolution that can only meet the user's daily needs at the office. But of course, for demanding creative needs like design or video editing, such a resolution is far from enough. Our REALME Book will bring you an excellent all-around screen with a resolution up to 2160 x 1440 and covering 100% sRGB color gamut. It delivers the true-to-life detail and rich colors, making for the best choice for designers and video entertainment lovers. REALME Book has a 14-inch IPS display with a broad viewing angle. The highest brightness is 400 nits, 33% brighter than the typical laptop. You can still clear the screen even when you're outdoor. Our REALME Book aspect ratio is 3:2. The benefit of a 3:2 ratio screen is that it can show you more content when viewing documents or browsing websites compared to the standard 16:10 aspect ratio screens, making it the perfect tool for work and creation. REALME Book features a nano-edge design and has an amazing narrow bezel of only 5.3 millimeters. The advantage of an ultra-narrow bezel is that it can break the visual boundary, bringing more stunning visual effects and a more immersive visual experience. Its screen ratio reaches 90%, which is higher than the one of the MacBook Air, and that's actually quite impressive. And that's all about the screen. And it's probably the best screen you can get in this price range. Now I will introduce you the design of our REALME Book. It is very slim, so it won't give you any burden, and it's super convenient to take on the go, so you have all you need to create always with you. Now, let's actually take a look at this video to see what it looks like. Our REALME Book is only 14.9 millimeters thick and weighs barely 1.38 kilograms. You must know that it's actually really hard to achieve such an incredible weight and thickness ratio in a 14-inch laptop. I'm so proud of what our designers were able to achieve here. Now, let me actually compare our laptop to the MacBook Pro and MacBook Air. We can see that the REALME Book is thinner than both of them and lighter than the MacBook Pro. Now, let me show you our blue version of REALME Book. It's so elegant and stylish, and it's also easy to carry.
It looks beautiful, right? The REALME Book adopts an aluminum alloy body design, which has been made possible through a series of super exquisite CNC and sandblasting and anodizing process. It's been elaborately built through more than 30 processes, and coupled with our mirror logo design, not only it is extremely comfortable, but screams high quality all over. In addition to the blue one I have, we also have a gray one, and we will introduce more stylish colors in the future. The above is everything about the REALME Book's appearance. Not only it is light and thin, but it's also very stylish and premium. I believe that performance is actually the part that everybody is concerned, as it determines what you can do and how long for. Being a leap-forward technology brand, performance is always REALME's strength. That's why REALME Book has the newest 11th generation Intel-Core processor. It adopts a 10-nanometer super thin manufacturing process with excellent energy efficiency performance and the newly upgraded CPU plus GPU structure. Its performance is far ahead of the previous generation. And with such a powerful engine, REALME Book efficiently tackles all creative tasks, a 50% improvement, which is even better than the discrete graphics card such as the NVIDIA MX 350. It doesn't matter if you're doing design, video editing, or 3D modeling. With such a strong performance, you can easily create and get things done. Also, it would be a real pity not to play some games. In our testing, the REALME Book can handle League of Legends and Overwatch in the highest graphics settings. Also, REALME Book can run smoothly when you set the low graphics quality in heavier games such as Shadow the Tomb Raider. Who said slim notebook performance is not good enough to play some games. There might be a disruption now you from can my actually end call your friends over and enjoy the REALME Book to play your favorite games together. Next, I'd like to invite Steve Long, the Sales and Marketing Vice President of Intel, to say a few words for you. Hey everyone, I'm Steve Long, Corporate Vice President at Intel Corporation, Client Sales General Manager. It's a privilege and an honor to be here today at the REALME virtual launch event. It's an exciting time to be in the technology business. There are very few industries that have such profound impact on society like technology does. COVID-19 has magnified the importance of technology. We've seen an acceleration in the digitization of everything. Ubiquitous computing enabled through cloud, 5G, artificial intelligence, and the intelligent connected edge, it's here to stay. And at the heart of all that is the personal computer, the PC. Everything about the world has changed in COVID-19. The way we work, the way we play, and the way we learn. The PC became the essential tool that brought people together across the world. The PC category will achieve its largest market ever this year. And we at Intel see a sustained growth in the PC category as more users come in to experience innovation, connection, and contribution for this essential device. It's a great time to be entering the PC category, which is exactly why we are here today. यहाँ पे Intel के साथ में इन्होंने अपना collaboration continue रखा है because Intel is also trying to maintain the market. The partnership that we have with them as they enter into the PC business. REALME has a history in technology across international markets. Many of you probably know them through the phone and the experiences that they enable through their phone. Today, we are thrilled to bring the REALME brand to the PC category. The product is called the REALME Book. The REALME Book is enabled with Intel's latest processor, the 11th Gen Core processor. It's an all-new upgraded CPU and GPU जी हाँ guys, आप price डाल सकते हो. Please pour in your prices. All previous generations. Super powerful and ultra thin and light experiences. This device is also powered with the latest Wi-Fi 6 technology and Thunderbolt, which allows lightning connectivity speeds and super fast charging. This is a device that I would absolutely travel with. Intel and REALME are excited to bring powerful performance devices to young generation users with
passion and imagination and creativity across the world. My sincere congratulations to our amazing partners at REALME on the launch of the REALME book, and we're very, very excited about things to come with you. Thank you. Thank you so much, Steve Long. I'm so happy REALME can cooperate with Intel to build a notebook with such a strong performance for our young users. In order to bring steady, high performance, we use the industry-advanced dual-fan, dual-copper pipes cooling system, which is able to dissipate heat efficiently while remaining quiet. So you can actually focus on your work and bring out your creativity without being disturbed. Charging Dual has fan has always been the 65 watt strength for supercharger जो mobile phones. 50% बैटरी, And this time, REALME Book has 50% बैटरी inherited चार्ज this होगा 30 advantage, मिनट्स में, supporting 65 watt super 30 watt fast का डार्ट charge चार्ज भी ये technology. सपोर्ट कर रहा है. REALME Book तो ये दो charges तीन up अच्छी to चीजें यहाँ पे देखने को मिल रही है 50% Realme Book in के only साथ में. 30 minutes. So you can quickly power up and have enough juice in case of emergencies. At the same time, our 65 watt charger is also compatible with our 30 watt dart charge technology. So you can fast charge your REALME smartphone as well as a variety of other USB-C port devices, such as tablets, power banks, and more. REALME Book has a 54 watt-hour large battery that can जी हाँ, आप continuously देख पा रहे हो यहाँ play पे locally 8.5 stored आवर का 1080p सिमुलेटेड ऑफिस videos टाइम for देखने को मिल रहा है. 11 11 घंटे का hours. बैटरी लाइफ क्लेम In किया जा our रहा है, लेकिन simulated मुझे लगता है offices, 8.5 REALME Book hours is excel with a a super big long time. endurance of 8.5 hours per charge, and that's plenty enough for a regular work day at the office. REALME Book supports up to 512 3 GB का gigabytes SSD and मिल रहा है, 8 GB का 512 gigabytes LPDDR4X of storage RAM आपको combination, देखने को मिल रहा है. meaning it will perform super fast when multitasking. And the super large storage capacity can hold all your beloved videos, photos, games, and leave plenty of room as an all-good future-proofing measure. That's everything about the performance. REALME Book is both जी हाँ, fast Core i5 and मुझे लगता है powerful, एक अच्छा making प्रोसेसर for the रहेगा. ideal tool i3 to and turn i7 your बहुत creative एक्सट्रीम हो ideas जाते हैं. into reality. Being a new entry in the laptop industry, we gave ourselves a clear mission 40,000 to के bring ऊपर प्राइस something नहीं new जाना चाहिए and Realme interesting. का. Therefore, we developed a brand new function called PC Connect, which can cross-connect Windows and Android systems so you can seamlessly connect your smartphone and computer. Via PC Connect, you can operate your phone and access your mobile apps directly on your laptop, and also achieve two-way file and picture transfer by simply dragging and dropping with your mouse or touchpad. What's more is that PC Connect can intelligently recognize the file types and can automatically open the documents shared in your mobile phone by using the most suitable Microsoft Office program on your laptop. By having such a wonderful function, you only need to focus on the task at hand on your laptop, enjoying the convenience of a bigger and larger screen, as well as a keyboard and a mouse. In terms of software, we pre-installed the original Windows 10 to help you maximize your productivity. A few months ago, as you know, Microsoft presented the new Windows 11 OS, which is more concise and efficiency-oriented. It also brings the best ever Windows PC gaming experience, even allow you to play Android apps. Of course, REALME Book will जी be हाँ, able फ्री to अपग्रेड मिल upgrade रहा है to Windows Windows 11 के 11 साथ में. for ये free. एक अच्छी So चीज़ है, stay बिकॉज tuned. आई बिलीव Windows 10 और Windows Now 11 let's में बहुत welcome कुछ बदलने Microsoft वाला है. Worldwide Device Sales Vice President Alvaro Silos. Hi, my name is Álvaro Celis. At Microsoft, I am the Vice President for Worldwide Device Partner Solution Sales. I am a Latino leader with black hair and black eyes. Today, I'm wearing a black shirt and a black coat. My pronouns are he, him, or él in Spanish. Today, I have a distinct pleasure to welcome REALME to the Windows Partner ecosystem with the launch of their device, the REALME Book, a device that will be available worldwide. Over the last year, we all witnessed the importance and the impact of the Windows devices in our lives, at home or at work, to do that remote work connection or hybrid work, pursuing digital transformation, or at school, where we connected millions of teachers with students to make remote learning a reality. With more than 1.3 billion users today, the Windows ecosystem is more vibrant than ever. The Windows platform became a liberator, a connector, an entertainer, an educator, a platform that allows us to do whatever we need from our place of choice.
opening multiple opportunities for each and every one of us. जी हाँ, रियलमी ने सब कुछ is a अच्छा देने Windows का that कोशिश you किया है, सिर्फ care and प्राइस love, इसका प्रॉपर and होना it's चाहिए, being 40,000 के reimagined, it's आसपास being प्राइस आना चाहिए. simplified. It's a gorgeous platform that allows you to connect with the people that you care, get the applications that you want, access the information that you need, and the games that you love. The Realme Book is an प्राइस incredible ज्यादा नहीं example जाना of चाहिए that 40,000 innovation. के It's a ऊपर. device that will simplify consumers' lives. It will make them more productive. It will allow them to balance their work and their information, being always up to date and secure, and will inspire creativity for those who dare to dream and to create. I would like to take this opportunity again to welcome Realme to the Windows Partner ecosystem. It's an honor to be here, and I'm looking forward to our joint success into the marketplace. Congratulations and welcome. Thank you, Alvaro Silus. Let's actually now move to the next जी हाँ, part. अभी देखना I पड़ेगा would like इन to तीनों का mention प्राइस again क्या that निकल के आता है. So Realme guys, please aims to pour in encourage कीजिए आपके more young prices people to if you think have any outside of the guesses. box and give form to their creativity. 21,000, Realme Book supports 29,000 two और Harman speakers 40,000 which लैपटॉप के support लिए. DTS, जी हाँ, यहाँ पे हारमन HD, का 2 stereo स्पीकर्स sound भी आपको यहाँ effect, पे देखने को making मिल for रहा an है. immersive surrounding audio-visual experience. Realme Book also has 2 microphones and supports HelloVoc, Voc Plus, AI noise cancellation algorithm, Voc Plus pre-processing technology, and Voc Plus screen suppression technology. So whenever you're attending teleconferences or communicating with friends, your voice will always be loud and clear. Speaking of clearly communicating, we focus on video conferencing related features and equipped the Realme Book with a built-in HD camera. Turn it on and all attendees will be able to see you clearly throughout meetings or your vlogs when you're off the clock. Our keyboard is also really worth talking about. जी हाँ, आप देख पा रहे हो बैकलाइट कीबोर्ड भी दिया है यहाँ पे कंफर्टेबल टाइपिंग के लिए. तो मुझे लगता है मैकबुक के सारे फीचर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं रियलमी के ओवरऑल जो यहाँ पे फीचर्स यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड किए उसमें. अरे लाइव चालू है यार. The Realme Book uses a super large touchpad which increases the control area by 44% compared with other normal notebooks. It also supports Microsoft PTP Precision Touch technology, which is fast and accurate to operate. Realme Book is equipped with a 2-in-1 fingerprint power button, and the fingerprint sensor resides in the power key. So you only need one step to open and unlock your laptop. And of course, your privacy stays safe and protected too. Realme Book has plenty of ports which can easily connect जी हाँ, यहाँ पे आपको थंडरबोल्ट के 4 पोर्ट देखने को मिल रहे हैं. थंडरबोल्ट 4 देखने को मिल रहा है. 3.5 mm हेडफोन जैक के साथ में भी आ रहा है. वो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है. One port can handle charging, data transmission, as well as the video output. The transmission rate can reach up to 40 gigabytes per second, and 2 4K screens can be connected at the same time. In addition, Realme Book also supports the new Wi-Fi 6 technology, which is 2.7 times faster than the previous generation. So not only is it faster than before, but it comes with a super anti-interference ability and super stability too. As a new player in this laptop industry, Wi-Fi 6 के साथ में आ रहा है. ड्यूरेबिलिटी टेस्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो. ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे फीचर्स आपको मैकबुक की तरह ही देखने को मिल रहे हैं. 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 90% का आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंट भी देखने को मिल रहा है. विंडोज 10 के साथ में आ रहा है. विंडोज 11 का सपोर्ट मिल रहा है. स्टेरियो साउंड मिल रहा है हार्मन कार्डन का DTS के सपोर्ट के साथ में. 14 इंच का 2K डिस्प्ले देखने को मिल रहा है. तो मुझे लगता है 14 इंच इज अ वेरी गुड इंटरमीडिएट पैनल, जहाँ पे 13 इंच और 15 इंच जो है 13 इंच छोटा हो जाता है, 15 इंच बहुत बड़ा हो जाता है. Which allows your smartphone and computer to seamlessly work in unison, so our young, talented users can turn their creativity into reality. Let's now have a final look at this wonderful laptop with this video. ये एक अच्छा फीचर है मुझे लगता है, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह करने के लिए आपको काम में आ सकता है. Before announcing the price, we also have a creativity kit for you, including a multifunctional Type-C hub, a wireless silent mouse, and a stylish mousepad. With them, it's more convenient to use the Realme Book, and you can effectively improve your creativity,
and efficiency. What's more, I'd like to let you know that our first REALME pad will be released soon. Stay tuned and look forward to it. I know you all have been waiting for the price drop. I saw a lot of you guessing the prices on the social channels that the Realme GT जी हाँ, अभी प्राइस की बात करते हैं। जी हाँ, प्राइस के लिए प्लीज आप बताइए मुझे क्या प्राइसेस होने चाहिए। मेरे ख्याल से तो 21,000 रुपीज इसका प्राइस होना चाहिए स्टार्टिंग का। Realme GT का जो स्टार्ट है वहाँ से। We want to disrupt this stereotype as a gift to our fans along with us in our journey to 100 million. You might be guessing the prices to be around 31,999, 32,999, जी हाँ, GT and का even प्राइस more for GT ME version. But why not start the pricing with number 2? As a reward and making us 100 million strong, Realme GT Master Edition will be available in 3 different variants. 6GB, 128GB, जी हाँ, वेरी गुड प्राइस है यहाँ पे 6GB 128GB का प्राइस है 25,999। इट्स अ लवली प्राइस जहाँ पे आपको 2,000-3,000 का डिफरेंस भी देखने को मिलेगा विद बैंक ऑफर्स। 256GB प्राइस एट जी हाँ, 3 वेरिएंट यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं 27,999 एंड 29,999 में आपको 8GB 256GB वेरिएंट देखने को मिल रहा है, जो मुझे लगता है मोटरोला के फोन को बहुत अच्छे से पीछे छोड़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्राइस। And purchase the 6GB 128GB variant at just rupees 18,199. जी हाँ, ये Realme का ये फ्लिपकार्ट का स्मार्ट अपग्रेड प्रोग्राम होगा 18,000, 19,000 एंड 20,000 रुपीज के साथ में। तो मुझे लगता है स्मार्ट अपग्रेड उन लोगों के लिए अच्छा है जो लोग ज्यादा करके प्राइसेस रिलीज ज्यादा फोन अपग्रेड करते हैं विद इन 1 ईयर। With not more than 18,000, you can get the Realme GT Master Edition with the Qualcomm Snapdragon 778 5G processor, 120Hz Super AMOLED full screen display, 65W Super Dart charge, 64 megapixel street photography camera and 4,300 mAh battery. It is a super slim and lightweight with just 174 ग्राम का वेट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26 अगस्त को इसका लाइव 26th of August, 12 noon onwards at realme.com, flipkart.com and stores nearby. First sale is on 26th of August. The 6GB 128GB variant will go कलर्स अगर आप मुझे पूछोगे तो तीनों भी कलर्स मुझे इसके अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक स्पेसिफिकली मुझे लगता है 5G, the sheer speed flagship, levels up your GT का smartphone प्राइस देखते हैं क्या experience निकल के आता with है। Snapdragon 888 5G processor, 65W Super Dart 30,000 से लेके charge, 40,000 के बीच में 120Hz इसका Super प्राइस आना AMOLED चाहिए। full screen display and Sony 64 megapixel triple camera and sports various gorgeous colors. The 8GB plus 128GB variant will be available in 2 very beautiful colors, dashing silver and dashing blue, and is priced at rupees 37,999 यहाँ पे प्राइस निकल के आया है 8GB 128GB का, which is still a fair price if you ask me. How dare you be the difference? Before we go on to the pricing of Realme Book Slim, shall we do a comparison as the most of you were expecting? For the Realme Book Slim i5 version, as you can see, we are providing a flagship grade display experience with 2K display and 100% sRGB color gamut coverage. The Realme Book also supports a unique 3:2 aspect ratio bezel-less display, making it the ultimate productivity machine. के आसपास उसका प्राइस निकल Both के आया these था। laptops punch way higher than their price tags. 50,000. So now let's check Realme the Book pricing Slim for which i5. you all have been waiting for. The Realme Book Slim, our first ever laptop, is solely designed to empower you, sporting the cool features and cool colors of Real Grey and Real Blue. Realme Book powers up your tech lifestyle with a 2K full vision display, 11th gen Intel Core processor, powerful bass sound by Harman Kardon, super slim and light build of only 14.9 mm, up to 11 hours of battery life, 65W super fast charge and Smart PC Connect. The Realme Book Slim i3 8GB 256GB variant जी हाँ, आपको Realme Book Slim जो है वो i3 के साथ में मिल रहा है। जी हाँ, मैं बोला ना आपको यहाँ पे प्राइस बहुत अच्छे से निकल के आना चाहिए था। 46,000 is not a good price for i3 laptop. only. i5 के लिए भी 60,000 is quite the huge launch offer price. price if you of ask Realme me. Book Slim i3 8GB plus 256GB version is rupees 44,999 थोड़ा प्राइसिंग ओवर प्राइस्ड हुआ है and the Realme Book Slim i5 बिकॉज़ 8GB ये प्राइस plus बेंच में आपको 512GB version HP और is priced at Lenovo की तरफ से बहुत अच्छे लैपटॉप देखने को मिलेंगे। 56,999 only. Both Realme Book Slim i3 version and Realme Book Slim i5 version will be available in 2 very gorgeous colors, Real Grey and Real Blue. First sale of Realme Book Slim will start on 30th of August 12 noon onwards. यहाँ प्राइस 10,000 रुपीस से ज्यादा लग रहा है मुझे। i3 should have somewhere around 35.
The and pricing has been i5 kept somewhere around considering the student 45,000. community in mind. Also, during the first sales date, we plan to get affordability offers like bank offers and no-cost EMI. Hope you like all our products today with a disruptive pricing. So don't miss the first sales to get the first hand-on experience on our very best smartphones and laptops. GT का प्राइस हम लोगों ने देखा. Realme Dare to Leap. Presenting REALME GT Master Edition GT का with प्राइस sheer speed बहुत and master अच्छे से design. निकल के आना चाहिए था, बट ठीक. जी हाँ, ओवरऑल मुझे लगता है, जी हाँ, एक रियलमी का और एक GT मास्टर एडिशन देख लेते हैं. सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है आपको. 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है. मुझे लगता है सेल्फी कैमरा में बहुत लोग इंटरेस्टेड है. सुपर डार्क चार्ज भी है. दिस विल बी द लास्ट वीडियो. उसके बाद हम Q&A में जंप करेंगे. जी हाँ, GT मास्टर एडिशन आप यहाँ पे देख पा रहे हो. जी हाँ, ठीक है. Presenting REALME GT. जी हाँ, रियलमी का GT मास्टर एडिशन डेयर टू लीप. जी हाँ, मुझे लगता है बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स. जी हाँ, यहाँ पे हम फिर से रियलमी का रिपीट टेलीकास्ट नहीं देखेंगे, तो मैं ये लाइव स्ट्रीम्स में से ये चीज़ हटा देता हूँ. एंड वी विल क्विकली जंप टू अवर Q&A सेशंस as early as possible. तो हेलो गाइज, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन अप टू द फुलेस्ट. और बहुत कुछ यहाँ पे कवर करने का कोशिश किया है रियलमी ने. 3 चीज़ों के ऊपर बात करते हैं. सबसे पहले मैं लैपटॉप के लिए बात करना चाहूँगा. आर्टिफिशियल ह्यूमन, यहाँ पे आपने बहुत अच्छा कमेंट डाला कि 57K में तो बैंक ऑफर लगा के MI का हॉरिजॉन i7 मिल जाता है. जी हाँ, तो मुझे लगता है रियलमी के लैपटॉप जो है वो थोड़ा ओवर प्राइस हो चुके हैं. 5,000 से लेकर 10,000 रुपीज़ का ओवर प्राइसिंग यहाँ पे देखने को मिला है. वेरी गुड कमेंट आर्टिफिशियल ह्यूमन, जहाँ पे आपका कमेंट मुझे पसंद आया. बिकॉज मुझे लगता है एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का जो मार्केट है, दिस इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट. एंड यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना प्राइसिंग ऊपर लेके जाओगे उतना आपको कस्टमर बेस कम देखने को मिलेगा. और सबसे बड़ी बात, लैपटॉप के सेगमेंट में मुझे लगता है कस्टमर्स विल ऑलवेज प्रेफर रिनोड लैपटॉप ब्रांड, जहाँ पे HP, डेल, लिनोवो जैसे ब्रांड्स आते हैं, जहाँ पे उनको बहुत अच्छा आफ्टर सेल सर्विस वगैरह भी देखने को मिलता है. तो आप मुझे बताइए, आप अगर 50,000 रुपीज़ के ऊपर का अगर मनी आप अगर पोर इन करना चाहते हो, तो ऐसी जगह पे विल यू गो फॉर दीज काइंड ऑफ लैपटॉप, जहाँ पे MI का या रियलमी का लैपटॉप आप खरीदोगे क्या? वो एक मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ. प्लीज़ प्रोवाइड मी योर आंसर. आर्टिफिशियल ह्यूमन के लिए डबल थम्स अप, उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया है जहाँ पे ये ओवर प्राइस हुए. अभी बात करते हैं रियलमी के बाकी के 2 फोन्स की. तो दोनों फोन्स का प्राइस मुझे ओवरऑल अच्छा लगा. 3-4 थाउजेंड रुपीज़ से प्राइस ऊपर लगता है, बिकॉज
फिर भी अगर आप देखोगे मोटरोला के फोन से अगर आप कंपेयर करोगे तो रियलमी का टॉप एंड मॉडल जो है वो 29,999 में बैठ रहा है। तो फिर भी इट्स अ वर्थ इट प्राइस, जहां पे आपको 12 GB 256 GB का वेरिएंट आपको वहां पे मिल सकता है 29,999 में। तो रियलमी का जो GT एडिशन है उसका प्राइस अच्छा लगा। जी हाँ ताहिर जी, हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। रियलमी GT इज ओवर प्राइस एटलीस्ट 5K। जी हाँ, कैमरा इज सेम एज 20 के स्मार्टफोन। जी हाँ, तो ताहिर जी ने बहुत अच्छा कमेंट डाला यहाँ पे। रियलमी GT इज ओवर प्राइस्ड। GT मुझे लगता है 30,000 के आसपास आ जाता था तो बहुत अच्छा हो जाता था। और जिस तरीके से मैंने बात किया, रियलमी का कैमरा जो है वो हमेशा वीक पॉइंट रहता है, लेकिन बाकी सारी जिन लोगों के लिए कैमरा इज नॉट अ बिग डील, उन लोगों के लिए दिस विल बी अ ग्रेट फोन। गेमर्स के लिए स्पेसिफिकली रियलमी का GT विल बी अ ग्रेट फोन टू बाय, बिकॉज आपको बहुत सारे निफ्टी फीचर्स देखने को मिलते हैं जहां पे आपका गेमिंग का नीड वो कंप्लीट कर सकते हैं। आपको क्विक चार्जिंग मिल रहा है, फास्ट, इंडिया का सबसे सुपर फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रहा है 65 वॉट का। उसके बाद में आपको स्टेनलेस स्टील वेपर लिक्विड कूलिंग देखने को मिल रहा है GT के साथ में। उसके बाद में आपको रैम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, डायनेमिक रैम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है, UFS 3.1 के साथ में आ रहा है स्टोरेज के साथ में, जिसकी वजह से मुझे लगता है रीड एंड राइट स्पीड्स विल बी गोइंग ऑन अ वेरी ग्रेटर नोट। तो इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो सारी चीजों के हिसाब से रियलमी GT का प्राइस फिर भी थोड़ा 4-5 हजार से ऊपर नीचे लग रहा है, बट दिस विल बी अ ग्रेट फोन फॉर श्योर। ठीक है, अभी बात करते हैं रियलमी की तरफ से जो बेस वेरिएंट जो फोन लॉन्च हुआ है उसके बारे में। यहाँ पे मैं थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज वो फोन भी बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी यहाँ पे आपके लिए लेके आया है। एक 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं क्विकली चेक कर लेता हूँ इसका सारा डिटेल्स फ्लिपकार्ट के ऊपर निकल के आया है क्या, बिकॉज उसके बाद हम थोड़ा खुल के बात कर पाएंगे इसके ऊपर। जी हाँ, रियलमी GT का मास्टर एडिशन का मैं बात करना चाहूंगा बिकॉज मुझे लगता है एक 5G फोन अगर आपको चाहिए और उसमें अगर आपको फीचर्स, अगर आप फीचर वाइज अगर आप देखोगे तो 5G के फीचर्स बहुत अच्छे से उन्होंने प्रोवाइड किए हैं। आपको स्नैपड्रैगन का 700 सीरीज का 778 5G प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। सेकेंडली आपको 65 वॉट का चार्जर भी देखने को मिल रहा है। जी हाँ ताहिर जी, हैप्पी टू सी यू आफ्टर लॉन्ग टाइम। 65 वॉट का चार्जर देखने को मिल रहा है। मास्टर डिजाइन मिल रहा है आपको। 32 मेगापिक्सल का AI सेल्फी मिल रहा है। 4300 mAh का बैटरी है जो मुझे लगता है एक दिन के लिए बहुत अच्छा है। GT मोड, जी हाँ, इन्होंने GT मोड यहाँ पे भी प्रोवाइड किया है ये एडिशन के लिए भी, जहाँ पे वो एक अच्छी चीज मुझे लगी कि मास्टर एडिशन में उन्होंने GT मोड निकाला नहीं है, यू स्टिल गेट द GT मोड। उसके बाद में एंड्रॉइड 11 देखने को मिल रहा है आपको। डायनामिक रैम एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है अप टू 5 GB। तो 8 GB वाला फोन 13 GB की तरफ चला जाता है, तो वो एक अच्छी चीज यहाँ पे देखने को मिली है। उसके बाद में 120 Hz का सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल 5 to 6 बॉक्सेस जो है वो बहुत अच्छे से टिक करता है ये। और मुझे अगर आप पूछोगे तो मैं रियलमी का जो ये वेरिएंट है 6 GB 128 GB का वेरिएंट है, इससे ज्यादा में 8 GB 128 GB का वेरिएंट अगर उसका प्राइस देख लेते हैं 27,999 का, वो वेरिएंट मुझे लगता है बहुत अच्छे प्राइस ब्रैकेट में गया है। अभी 2021 का एक ट्रेंड आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मुझे लगता है कि 30,000 रुपीज, 20,000 से लेके 30,000 का जो मार्केट है वो बहुत हीटअप होना स्टार्ट हो चुका है, बिकॉज वहां पे बहुत अच्छे अच्छे निफ्टी फोन्स आपको देखने को मिल रहे हैं। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी अ ग्रेट पॉइंट फॉर यू गाइज। ठीक है, तो इसके ऊपर ध्यान दीजिए, अगर आपको फोन बाय करना है डोंट बाय ओवर 30,000 रुपीज, जहां पे आपको ज्यादा फीचर्स नहीं मिलने वाले, लेकिन 20,000 से 30,000 के बीच में यू कैन बाय अ वेरी गुड फोन फॉर योर सेल्फ, जहां पे आपको 5G भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बात यू कैन कंसिडर दिस एज अ टेक विश्व की तरफ से एक छोटा सा टिप आपके लिए। ठीक है, ताहिर जी के बाद में मैं कुछ सवाल यहाँ पे देख नहीं पा रहा हूँ, तो गाइज इफ यू डोंट हैव एनीथिंग वी कैन कंक्लूड दिस सेशन। इवन आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, तो मुझे भी मेरा लॉग इन करके मेरा काम चालू करना है, लेकिन अगर आपके पास और कोई सवाल है तो आई कैन स्पेयर 5 more minutes टू आंसर दोज। ठीक है, लेकिन अगर आप इन तीनों फोनों में मुझे पूछोगे, आई एम वेरी हैप्पी विद द रियलमी GT सीरीज। GT सीरीज जो है वो गेमिंग सेंट्रिक रहेगा, ये पहले बता देता हूँ। कैमरा वालों के लिए ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन इसमें भी जो रियलमी का जो बेस फोन है जिसके बारे में बात कर रहे हैं GT मास्टर एडिशन, वो फोन भी बहुत अच्छे प्राइस ब्रांड में आया है। रियलमी GT का भी प्राइस ब्रैकेट अच्छा आया है, उसको रिस्पांस कैसे मिलता है आई डोंट नो, लेकिन GT सीरीज में वो भी फोन उन्होंने अच्छी जगह पे लॉन्च किया। जी हाँ, आर्टिफिशियल ह्यूमन ने भी यहाँ पे डाला है कि वाई ऑनर स्टॉप लॉन्चिंग लैपटॉप्स इन इंडिया।
as its first Magic Book 15 was sold in 30 seconds in every sale. Metallic build SSD Ryzen 5 8GB। जी हाँ, आर्टिफिशियल ह्यूमन जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि कभी कभी कैसे रहता है ना, एक कंपनी एक फर्स्ट बैच लॉन्च करती है और फर्स्ट बैच का सेलिंग उनको जितना जल्दी मिलता है उसके हिसाब से कंपनी अगले कुछ सेल्स लाने का कोशिश करती है। और आपने नोटिस किया होगा ऑनर इज नॉट वेरी एक्टिव इन इंडिया। ऑनर ने बहुत कुछ पहले ट्राई किया, लेकिन उसके बाद में मुझे लगता है ऑनर ने वो ब्रांड ही एक सबसाइड हो गया। दैट माइट बी ड्यू टू उनका जो पेरेंट कंपनी है हुआवे के साथ में इंटरनेशनली बहुत कुछ हो गया, जिसकी वजह से मुझे लगता है ऑनर वाज द इम्पैक्टेड ब्रांड। आपको ऑनर की तरफ से ज्यादा फोन भी नहीं देखने को मिले। आइडियली ऑनर के फोन्स भी बहुत अच्छे तरीके से मार्केट कैप्चर करना स्टार्ट कर दिए थे। तो आई होप आर्टिफिशियल ह्यूमन में मेरा सवाल आपको पसंद आया हो। ताहिर जी ने यहाँ पे पूछा है व्हाट इज योर बेस्ट opinion to of company not providing base variant। what is your opinion of company not providing base variant? जी हाँ, बेस वेरिएंट में अगर आप यहाँ पे बात करेंगे तो 6GB रैम और 128GB का बेस वेरिएंट आप अभी भी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मुझे लगता है 25,000 के रेंज में 6GB रैम विल ऑब्वियसली डू, जहां पे आपको रैम एक्सपेंशन जैसा फीचर मिल रहा है, जहां पे 5GB का रैम एक्सपेंशन आपको मिल रहा है और 128GB का स्टोरेज आजकल के ज़माने में बहुत हो जाता है। तो ताहिर जी मुझे लगता है कि बेस वेरिएंट में जो कंपनीज अच्छा फ़ोन प्रोवाइड करती है उसके बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे लगता है आप यहाँ पे पूछना चाहते हो कि बेस वेरिएंट का फ़ोन बाद में लॉन्च होता है, उसके बारे में अगर आप बात करें तो मैं बताना चाहूँगा ये वन प्लस नॉर्ड ने नया निफ्टी फीचर चालू किया मार्केट में। नई नई मार्केटिंग स्किल्स लेके आते हैं लोग, जहाँ पे हाइयर प्राइस वाला फ़ोन आपको पहले दिया जाता है और जो लोअर बेस वेरिएंट वाला फ़ोन है वो कम रेंज में भी आता है और बहुत कम पीसेस भी उसके अवेलेबल रहते हैं और वो जल्दी से जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। तो दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिसी जो रेडमी ने पहले से यूज किया था। सिमिलर मोड्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि यू गाइज नीड टू डिसाइड योर ओन बजट। आपका ओन बजट डिसाइड कीजिए और आज के जमाने में टेक विश्व का रिकमेंडेशन आपको लेना है तो गो फॉर एनी फोन बिटवीन 20,000 टू 30,000 रुपीज, जिसमें आपका मनी डिवैल्यूएशन नहीं होगा और आपको एक अच्छा फोन मिल जाएगा जिसको आप 2 से 3 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, दैट इज अ की टेक अवे फ्रॉम टुडेज लाइव सेशन, बिकॉज रियलमी, उसके बाद में शाओमी, रेडमी, उसके बाद में MI, उसके बाद में आपने देखा होगा वीवो, ओप्पो और ऑलमोस्ट सारे कंपनीज ने वन प्लस के बाद में मुझे लगता है ये जो है ये एक तरीके से मार्केट में ये ऑफर ही ये हो गया है। टीवी अमेजोन यहाँ पे बोल रहा है आई बॉट वन प्लस नॉट 2 फॉर मी एंड iQOO 7 फॉर माई ब्रदर। डिमेंसिटी 1200 इज नॉट इवन फुट ऑफ स्नैपड्रैगन 870। आई वॉन्ट माई ब्रदर्स फोन। ओके जी हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि कुछ कुछ जगह पे अगर आप, मुझे लगता है टीवी अमेजोन आप यहाँ पे बात कर रहे हो कि आप गेम ज्यादा खेलते होंगे, तो मुझे लगता है गेमिंग की वजह से अगर हम बात करते हैं, जी हाँ, तो स्नैपड्रैगन का जो क्वालिटी आता है गेमिंग के लिए स्नैपड्रैगन इज ऑलवेज बेटर, बिकॉज एक सस्टेन्ड परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगा वहां पे। डायमेंसिटी 1200 Antutu स्कोर्स के लिए और उसके लिए अच्छा है, लेकिन आप लोगों ने दिस इज योर रियल वर्ल्ड सिनेरियो, तो मुझे लगता है आप लोगों को वो डिफरेंस आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, सो टीवी अमेजोन गो एंड बाय योर ब्रदर्स फोन। बिलीव कीजिए मुझे, मेरे ब्रदर के पास वन प्लस नॉट है और मैं खुद वीवो का फोन इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी भी। ही विल नॉट गिव मी अ सिंगल चांस टू टच हिज फोन। छोटा भाई होके अच्छा वाला फोन वो खुद इस्तेमाल कर रहा है और मेरे पास एक नॉर्मल लेवल वाला फोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो इट हैपन्स एंड इट कंटिन्यूज। लेकिन टीवी अमेजोन जी, आपके लिए एक स्पेशल मेरे एंड से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। कैन यू प्लीज ड्रॉप मी योर कॉन्टैक्ट नंबर और आपका ईमेल आईडी आप सेक्शन में डाल सकते हो क्या, जहाँ पे मैं आपके साथ में कनेक्ट कर सकूंगा। एक सेशन में आपके साथ में बनाना चाहूंगा जहाँ पे वी कैन गो लाइव एंड डू वन प्लस नॉट 2 का आपका रियल वर्ल्ड यूसेज कैसे है और आपको क्या क्या चीजें नोटिस हुए उसके बारे में मैं कुछ सवाल आपको पूछूंगा। इफ यू फील कंफर्टेबल टू डू सच काइंड ऑफ सेशन ड्यूरिंग दिस वीकेंड, प्लीज लेट मी नो। ठीक है, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू एनरोल यू इन माई चैनल with doing a live stream. I believe these kind of stuff will be more helpful to all the people in our segment जो टेक विश्व को अच्छे से फॉलो करते हैं। ठीक है,
जी हाँ, तो आई बिलीव दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिले। यहाँ पे कुछ छोटी छोटी निफ्टी थॉट शेयरिंग भी हम लोगों ने की। लेकिन इफ यू आस्क मी आउट ऑफ 10, इफ यू आस्क माय ओवरऑल स्कोर रियलमी के लैपटॉप्स के लिए, आई विल प्रोवाइड अ स्कोर ऑफ 7 आउट ऑफ 10। इसके 3 पॉइंट मैं कट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ ओवर प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। और बिलीव कीजिए, मुझे रियलमी ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया होगा, लेकिन प्राइस सेंसिटिव मार्केट में आप 10,000 का डिफरेंस नहीं ला सकते हो। सो आई विल बी रेटिंग इट 7 आउट ऑफ 10। उसके बाद में रियलमी के जो दोनों फोन लॉन्च हुए मास्टर एडिशन, आई विल बी रेटिंग समवेयर अराउंड 8 9 आउट ऑफ 10। जस्ट एक पॉइंट में यहाँ पे कट कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा। वी डोंट नो कैमरा में कोई इंप्रूवमेंट वहाँ पे दिखने को मिल रहा है कि नहीं। एंड रियलमी GT जो है उसके लिए मैं रेट करूंगा 9 आउट ऑफ 10 जस्ट बिकॉज ऑफ द कैमरा। लेकिन बिलीव कीजिए मुझे, कैमरा एक अगर आपके लाइफ में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, ऐसे लोग रहते हैं मेरे जैसे लोगों का आप एग्जांपल ले सकते हो, जहाँ पे मैं कैमरा के लिए ज्यादा जाता नहीं हूँ। आई हार्डली क्लिक एनी कैमरा एनी पिक्चर्स इंडोर्स। बाहर जाते किसी दिन, अब अगर घूमना होता है, आपको पता है कोविड-19 की सिचुएशन में, विच इज अ वेरी रेयर सिनेरियो, तो ऐसी जगह पे थोड़ा कैमरा यूज होता है। और ब्राइट सनलाइट में तो भंगार से भंगार कैमरा भी आपको अच्छे से फोटो डिलीवर करके दे सकता है। एंड आई ऑल्सो यूज आईफोन, तो उसमें उसका यूज करके कैमरा का नीड खत्म हो जाता है। तो ऐसी जगह पे अगर आप भी मेरी तरह हो, जहाँ पे यू कैन इजीली डू योर नॉर्मल कैमरा वाला यूज, और अगर आप एक प्रो लेवल के गेमर हो जहाँ पे आपको बहुत कुछ गेमिंग के लिए चाहिए, तो दीज फोन्स विल बी गुड वेरिएंट फॉर यू। प्राइस डिफरेंस है, आपका बजट टाइट है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू गो फॉर रियलमी GT, बट यू कैन गो विथ रियलमी GT मास्टर एडिशन फॉर श्योर। ठीक है जी हाँ। टीवी में अमेजोन की और एक कमेंट आई है, आई वॉज ऑल्सो मेकिंग टेक वीडियोज ऑन यूट्यूब टिल लास्ट ईयर हैविंग 6K सब्सक्राइबर्स, but I was unable to clear my pilot test, so I had to left YouTube. Else I have no problem to share my experience of Nord 2. Don't worry, if you still want to be a part with me, जहाँ पे आप मुझे मेरे साथ में आपका सारा व्यू चेक करो, और उसके बाद में मैं एक वीडियो बना सकूँ, वैसे भी काम करेगा। एंड आई विश यू अ वेरी गुड बेस्ट ऑफ लक फॉर यू for your pilot test. I know sometime we fail, लेकिन keep it up. You will definitely go and do it in the next one. ठीक है। उसी के साथ में ताहिर जी ने बोला है, सर फॉर मी टू कैमरा इज नॉट इम्पोर्टेंट। जी हाँ, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर आपके लिए कैमरा का इंपॉर्टेंस नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दीज फोन। इन दोनों में अगर आप प्राइस क्रंच में हो, तो डेफिनेटली गो फॉर रियलमी GT मास्टर एडिशन, जो फोन मुझे बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा है। ठीक है, तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दोज फोन्स फॉर श्योर। ठीक है, वो आप जरूर GT मास्टर एडिशन के लिए आप जरूर जा सकते हो। ठीक है, on this note, I believe we can conclude this session. It's 1:52 PM. We almost reached, we are almost completing 2 hours of time, जहाँ पे 1.5 घंटा ऑलमोस्ट खत्म होने को आया है। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग गाइस। आप मुझे फॉलो करते रहिए, मेरा चैनल देखते रहिए। आपका हर एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेट करेगा। आपको कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए मेरे यूट्यूब के लाइव सेशंस में, तो प्लीज डू टेल मी, एंड आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक नेसेसरी चेंजेस फ्रॉम माय एंड। ठीक है, ऑन दैट नोट लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन, लाइव सेशन जो जल्दी ही आएगा। तब तक यू कैन वॉच द फुल डिटेल वीडियोज ऑफ दीज प्रोडक्ट्स ऑन माई चैनल। ठीक है, bye bye. Thank you for joining guys, and please stay tuned and please subscribe. Thank you for joining. Bye bye everyone.